Hello, dear friends, wonderful Wonder Tips channels viewers. Today, I have brought wonderful personality who is a great healer of Reiki, Ho'oponopono, EFT, and tarot cards and some other techniques which she will be telling us. And it is a very good chance to learn everything what you can learn in this 35-minute session. This podcast is going to be a great one for everyone. Just fasten your seat belts and concentrate. And it is better if you keep some paper and pen also with you so that you can note down. Otherwise, you'll have to go through time and again in this video. So, welcome to none other than Madam Parul. She is expert, as I have told. She is giving you her introduction and then we'll start our formal podcast. Yes, welcome, ma'am. आपका स्वागत है इस चैनल Namaste, पर. sir. Welcome. Thank you. Please give your introduction. Hi, I'm Parul. I am a chartered accountant who left her chartered accountancy practice and got into healing full time. I'm a Reiki grandmaster, an inner child healer, an intergenerational healer, a tarot akashic reader, and many healing modalities I have done, which has helped me to transform my life. And these are the techniques that I use for my community also to help them to achieve their dream life, their abundant life that they want to achieve. वंडरफुल मैम. और सभी मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि आई हैव लर्नड माई होपनो एंड EFT फ्रॉम माई पारुल मैम. She is really a great teacher, great healer, and you will be seeing how she is replying to our questions from deep from her heart. So all the best. So welcome my all viewers, and now let us welcome again to Madam Parul and then Parul ma'am. Yes, we are going to start our question answers. How has your understanding of healing changed since you first began your journey? Initially, when I started into healing, I thought it was, taking out all the bad things inside you. It was like something wrong was with me that I had to change. But over the period of time, I realized that I have to not change anything in me, but I have to start accepting more of who I was. If I'm feeling angry also, I have to accept that anger. Okay, I can be angry at times. We have find the reasons, not feel guilty, shame that, I'm becoming this kind of a person. Right. And Wonderful. second is that after healing, I also felt it is not a magical wand that, everything in your life will change. It is a consistent work which you do every day for the rest of your life. Very good, very good. Really true. And ma'am, tell me, how do you differentiate between emotional healing and energy healing? Are they connecting to each other? Absolutely, 100%. Your emotions, who are you? If you talk about your physical body, what are you? You are Mm, all energies. Your right. emotions, your thoughts are something that you perceive over the period of your life. Yes. And how you feel is how your energy is always going to be. And the best part is that you can work on both of them together. Right. Wonderful. And the thing is, like we are talking, it is looking very a simple place where we are talking about positivity, talking about energy. I think this energy is flowing to our viewers also. What do you say? Totally, absolutely. Have you ever watched something that made you feel very nice? It connected to your soul immediately. But there are some things that don't connect to you. Mm, Magically, you are going through a tough time, a struggle in your life, and magically a person will appear in your life. right. And you feel, okay, thank you, God, something shifts. So, yes, when we are talking here, I'm 100% sure all the people who are watching, they'll start shifting Right. through this broadcast of yours. Right. And ma'am, I tell you one very interesting thing. When I was getting your training, at that time you told that money is also energy. Before that, I was thinking, yes, it is just like a currency note. It may be of any country. It is coming to us. We love it. When it is going, we are feeling bad. But you changed that perception. You told that energy
healing in this money is energy. When it goes, you should be happy. When it comes, you should be happy. So in that way, both case, it should be very good. So you tell something about this to my all viewers, how they should take it money as energy. Okay. So understand that money is always a reflection of how you feel. अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हो रही हैं, तो मनी को भी बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है और मनी आपके पास नहीं आने वाला है क्योंकि उसको लगता है इतनी स्ट्रगल है, मैं क्यों जाऊं। एक Right. सिंपल एनालॉजी देती हूँ। आपका एक फ्रेंड है जो हमेशा क्रिप करता रहता है, हमेशा बोलता रहता है यार ये सही नहीं है मेरी लाइफ में, वो सही नहीं है मेरी लाइफ में। तो आप उसके पास जाना पसंद करोगे हाँ, कि आप उससे बिल्कुल। दूर रहोगे कि यार ये हमेशा बोलता है ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा मेरे परेशान रहता है, ये मुझे नहीं जाना है इसके पास। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, मनी को भी बस वही लगता है। अब हमेशा बोलते रहते हो पैसा नहीं है, पैसा आ नहीं रहा, पैसा कैसे आएगा, तो मनी को लगता है यार ये हमेशा यही बोलता रहता है, मैं क्यों जाऊं इसके पास। राइट। और बिल्कुल। जो भी लोग हैं वो करके देखे, आपको रियलाइज होगा कि जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसा मेरे पास वैसा ही आ रहा है, या तो आ जाता है बट फिर वो चला जाता है राइट। क्योंकि मेरे को टेंशन होती है मैं क्या करूं इसके साथ, मैं इसको सेव करना पड़ेगा, मैनेज कर, तो उसको लगता है इतनी तुमको टेंशन हो रही है तो ठीक है मैं चला जाता हूँ। राइट। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये बताइए, व्हाट आर द बिगेस्ट मिथ्स people believe about energy work like Reiki, EFT, and Ho'oponopono? दे बिलीव कि मैजिक वॉन्ड है, कि कोई हम आएंगे, कुछ तुम करोगे और वो सब ठीक हो जाएगा। पीपल डोंट रियलाइज कि हम सिर्फ एक मीडियम है, लाइक मी एज अ हीलर एंड अदर हीलर्स ओवर देयर whoever they are all just medium to help you out, to Right. hold your hand. We are like your guiding angels, but the work has to be done by you. सेकेंडली, लोगों को लगता है कि हीलिंग वगैरह ये जो मोडालिटीज है ये लोगों को फ्री में करनी चाहिए, बिकॉज तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो तो तुम उसके लिए पैसे कैसे चार्ज कर सकते हो। Mhm. बट प्लीज रिमेंबर कि द पर्सन हु इज गिविंग इज ऑल्सो गिविंग देयर एनर्जी, so Right. you have to give them back. There has to be an energy exchange. So money is an energy that we exchange in case when we are giving you that energy. Very correct. Very correct, ma'am. And you tell me one thing, that out of these three modalities and some more you are having, how should be the, serial or say priority, like Reiki, EFT, Hopno. I tell about myself. Since I started with you, after that I made something changes in my thought process. I started meditation, which I am doing for years together. Meditation for say 5 to 10 minutes, then EFT, it takes another 10 minutes, then Hopno, it takes around 12 minutes if we complete around 105, 108 times. So it is giving results, I have seen. So what you say that people should do it so that confusion may be avoided? सी सर, सबका कॉलिंग डिफरेंट होता है। व्हाट आई हैव लर्नड इन माय जर्नी इज कि एवरी पर्सन हैज अ वेरी डिफरेंट कॉलिंग फॉर हीलिंग। देयर आर सो मेनी हीलिंग मोडालिटीज इन द वर्ल्ड कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, बट सबकी कॉलिंग इज वेरी डिफरेंट। सो Right. जहां आपको कॉल्ड लगे, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस ईच पर्सन फील्स कि हमें कहाँ जाना है, कौन सी हीलिंग मोडालिटी करनी है। सो इट इज अ पर्सनल चॉइस दैट एवरी वन फील्स, बट इफ यू आस्क मी दैट रेकी helps you at the energetic, it is a attuned healing, so it is not that everyone will be doing it. People who are attuned will be doing it. So Reiki and Hoponopo are two healing modalities that help you to change a lot in your DNA level, बिकॉज इट इज अ डीएनए लेवल ऑफ हील। तुम्हारी कार्मिक हीलिंग हो रही है, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन हो रही है, तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऑल थ्री थिंग्स गेट्स sorted out. And when we come to EFT, it is more of a psychological tool which helps you with your mindset, with your belief system. वो सब जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं एक्शंस नहीं लेता हूँ, मैं प्रोकास्टिनेटर हूँ, वो जो आपकी बॉडी में ये सब मेमोरी स्टोर्ड है बिकॉज आप इतना कुछ हो चुका है लाइफ में, तो ईएफटी उन सब चीजों पे बहुत जल्दी काम करती है। राइट। राइट। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया मैम। अब ये बताइए कि suppose there is one person who says, I am having so many problems. Why God is not helping me? If that type of mental state is there, then I have seen that meditation was one tool which I was having for long years. But
After getting Ho'oponopono and EFT, emotional freedom technique, and Ho'oponopono means forgive everyone, prayer for everyone, in spite of fighting or doing, on that type of feeling. So, what you tell that these modalities can change the past pattern of the person? Yes, they can change how a person thinks. If a person thinks कि मैं हमेशा ही अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं, भगवान को भी बोलता है कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, आप भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो। हम जाते हैं, जब हम डिफिकल्ट फेजेस पे जाते हैं, वी ऑल गो थ्रू दिस प्रोसेस जहाँ हमको लगता है कि वी आर अलोन, नो वन इज सपोर्टिंग अस। बट वेन यू हैव दिस हीलिंग मोडालिटीज विद यू, इट शिफ्ट्स यू, क्योंकि तुमको लगता है कि मैं कभी अकेला हूं ही नहीं, क्योंकि कोई एक एंजल है, गार्डियन एंजल्स हैं जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट Right, वो आता है कंसिस्टेंट रिजल्ट। जनरली क्या होता है लोगों के साथ कि वो हीलिंग में जाते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, फिर वो हीलिंग में घुस जाते हैं, फिर वो मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन में या महीने में या जो भी उन्होंने कोर्स ज्वाइन करा है उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि ये काम तुमको रोज करना पड़ता है, और स्पेशली जब तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है उन टाइम पे तो जरूर करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज व्हेन यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। तुमने यूनिवर्स को बोला कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए, तुम रह रहे हो एक छोटे से 2 BHK में, वहां पे आया लैंडलॉर्ड, उसने बोला कि घर खाली कर दो। अब तुमको लगेगा ये क्या स्यापा मेरे सर पे आ गया, भैया मेरे को क्यों घर खाली करना है। पर तुमने right. तो यूनिवर्स को बोला कि तुमने बड़े बड़े घर में जाना है, तो तुम इस छोटे घर से नहीं निकलोगे तो बड़े घर में कैसे जाने वाले हो। Very correct. Very तो वो correct. सारा जो केओस होता है वो इसीलिए होता है कि जो तुमको चाहिए वो तुम्हें मिल जाए। बट हम में से ज्यादा लोग वो लास्ट स्टेप पे आके गिव अप कर देते हैं। Right. इसका मतलब दिस मीन्स एवरीबॉडी हैज टू वर्क हार्ड आफ्टर गेटिंग द क्लासेस lessons from either Reiki, Ho'oponopono, EFT, meditation. One has to manifest it on daily basis. How much time you spend? वर्क हार्ड तो नहीं बोलूंगी सर, मैं बोलूंगी वर्क कंसिस्टेंटली। Yes, करके छोड़ मत दो। हैव फेथ ऑन योर मेंटर्स, हैव फेथ हुएवर यू आर वर्किंग विद, उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखो कि उनकी अगर लाइफ चेंज हुई है ये सब करके, यू ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी टू चेंज। नो वन इज डिफरेंट, एवरी सोल हैज अ कैपेसिटी टू चेंज देयर लाइफ एंड मेक इट द वे दे वांट। right, बट यू हैव टू हैव अ लिटिल फेथ एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। right. Wonderful. Hello, my viewers. Are you enjoying? If you are enjoying, then fill total comments with your, feelings. That will push us for further better episodes on this healing section. And I tell you, you start doing it, you will not repent, you will not regret, you will get what you want. As I have seen in Earl Nightingale audio, you become what you think. You knock the door, opportunities will open. So we are with great healer Parul ma'am, and every detail of her will be given in the description of this podcast. And you just enjoy, my dear friends, and start doing meditation, Reiki, Ho'oponopono, EFT, whatever you love. You do it, and do it with your inner self, and you will feel that things are going in a great way. Your version will be totally changed. You will be more energetic. Sometimes when people are not having energy, how they will shift that energy, they will hold that energy which is coming in their way. So all the best. Now again, coming on to the next question, ma'am. You speak of inner child healing. Can the child within truly be healed at any age? Yes, yes. So inner child healing is a very topic very close to my heart. Right, So what is inner child healing? Inner child healing is from age to 0 to 15 years is when your brain is developing. right, So आपका ब्रेन का जो हायर पार्ट होता है, पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थॉट्स एक्सेट्रा, इज नॉट डेवलप्ड। तो उस right, टाइम पे वट एवर इज हैपनिंग इन योर ब्रेन जस्ट परसीव्स इट एज मेमोरीज। वो एनालाइज नहीं कर पाता, वो उसको ले लेता है, अच्छा लगा, बुरा लगा, बुरा लगा, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्ट ग्रोइंग। हमारी टीचर ने हमको बोल दिया कि तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो, वील स्टार्ट ग्रोइंग अप विद दैट थिंकिंग, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई एम नॉट गुड इन मैथ्स। और हम बड़े होके भी हमें वो फेयर रहेगा, जैसे ही मैथ्स सुनेंगे तो हमें डर लगेगा कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता।
Right. So our brain is growing constantly on those years. और जो भी हम और अभी every child will perceive it differently. Parents best of intention से कहे तब भी हो जाता है. But you can heal it anytime. I have students who are age of 60, 50, 40 who have worked on their inner child at that age also. Where they knew कि कुछ disconnect है life में, it is not happening for me, things are not working out for me, map out नहीं हो रहा है, and lot of blockages because till the time we don't heal or we have a good connection with our parents. And connection does not mean कि respect करना है, but a good connection that we feel कि okay, I'm so grateful to you, that you've given me birth. So till the time we don't feel that, हमारी life में कुछ ना कुछ issue चलता रहेगा. Because our parents have to, our relationship with our parents have to be solid for us to grow also in life. कुछ ना चलेगा, relationship में चलेगा, health में चलेगा, किसी ना किसी चीज में कुछ चलेगा. Right, right. Wonderful. So, next question comes, what are some practical daily habits that help people stay emotionally grounded and spiritually connected? एक तो बाहर जाइए, go out, make sure you are spending some time in nature and without any distraction. फोन पे म्यूजिक नहीं सुनना है, किसी से बातें नहीं करनी है कि चल गप्पे मार लेंगे. यू हैव टू जस्ट बी देयर, जहां पे भी आप वॉक करते हो, नेचर एंजॉय करो, ट्रीज को देखो. मदर नेचर अपने आप में ही बड़ी हीलिंग और सूदिंग होती है. नंबर टू, स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव थिंकिंग. एनीथिंग, स्टार्ट इट विद ग्रैटिट्यूड. बी थैंकफुल कि तुम जिंदा हो. So many people don't wake up to see the next day also. Right, So just be grateful that you are alive today and you have a beautiful family around you. So ये छोटी छोटी चीजें, gratitude हो गया, nature में time spend करा, and start cutting yourself from all these reels because जो social media पे हमेशा दिखता है वो true नहीं होता है. और right, जितना हम negative देखते हैं उतना हम उसको magnify करते रहते हैं. सो छोटी छोटी जो ये हैबिट्स होती है कि ठीक है, आज मैंने 10 मिनट कम सोशल मीडिया पे बताया, मेरे को नहीं देखनी दूसरों की रीलें रूलें, आई फोकस ऑन माई सेल्फ. उसकी जगह मैंने 10 मिनट वॉक कर ली. सराउंड योर, बिकॉज दिस इज साइकोलॉजिकल रिसर्च दैट यू आर हु यू टाइम स्पेंड विद. सो तुम्हारी लाइफ में जो टॉप 5 पीपल जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करोगे, यू स्टार्ट बिकमिंग दोज पीपल. right, right. So you choose your around who you are spending time with also very carefully. So small habits, gratitude karo, make sure you are going out and see what, be conscious कि तुम क्या watch कर रहे हो, and most important, अपने emotions को value करो. Sit with your emotions. ठीक है, I'm feeling angry, I'm feeling jealous. उनको ना दबाओ मत. Half और our health issues are because हम अपने emotions को दबा देते हैं. We just suppress them. कि ठीक है, गुस्सा आ रहा है, no, control नहीं करना है. You Mhm. have to let it go. You have to accept it. Right. Very सिर्फ good. पॉजिटिव थिंकिंग नहीं वर्क करती. यू हैव टू चूज द इमोशन कि ठीक है, एंगर है, मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता. Right. बिल्कुल सही. Very good, ma'am. And next question comes, have you experienced spiritual burnout sometime? If yes, how did you regain that balance? What have I experienced? Uh, Spiritual? that spiritual burnout. Spiritual burnout. Actually, I have been surrounded, I'm blessed with great mentors. So they had already told us कि see, take breaks, don't burn out. जब चाहिए body को break लो. And I'm very consistent with my breaks. We go on family holidays. I take work I almost on every Sunday I am off social media. I hardly post. I hardly do anything on social media. So I've been blessed to have mentors, teachers who have taught me the right way to do. Who have taught me कि exhaust होना is not money. Exhausted, you have to value yourself first. So, touch wood, I have not experienced this initially when I started working. तो ऐसा लगता था कि और कर लो. But now I'm in a good space. So, no. So, Wonderful. it would be my advice that you also, take that regular breaks for yourself. Right, right. Good. So next question is, can trauma be passed down through generations? If so, how do we recognize and break that cycle? Means from our forefathers, Yes, parents, like trauma can be passed down from generations and generations, from your ancestors to you, because
Understand, Carl Jung, psychologist, said that we are the archetypes of everything that our ancestors have done. So your subconscious is connected to your, उसके ऊपर imprint है what your ancestors went through. It is in your DNA. Whether you like it, you don't like it, it is part of your DNA and you are carrying it. But we also have to understand that everyone is not meant for this work because it's, see, you have to heal generations जो चली गई हैं. So everyone is not meant for the work. This is a calling that a person will get. कि ठीक है, मेरे को ना अपनी फैमिली एंसेस्ट्रल हीलिंग पे वर्क करना है, मेरे को अपनी जनरेशनल हीलिंग पे वर्क करना है. दिस इज अ कॉलिंग दैट पीपल गेट एंड देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल. देयर इज फैमिली कॉन्स्टलेशन, देयर इज इंटरजेनरेशनल ड्रामा, there is Akashic. So there are many other healing modalities, therapists, past life regression. So these are all the therapies which help you to understand your generational, जो ancestrally तुम्हारी life में आ रहा है, वो सब understand करने में it helps you a lot. Very right, ma'am. And the biggest advantage is in this world of so much education, where we can see through us inside, we can make peaceful with Reiki, Hopno, Akashic healing, and then this, EFT meditation. That people Yes, who yes. spend But their don't time, get overwhelmed. yes, आजकल लोग ओवरवेल हो जाते हैं क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, right, right, इतना सारा कुछ अवेलेबल है, इतना इजीली अवेलेबल है सब कुछ. गूगल करो, आंसर, चैट जीपीटी आ गया है तो चैट जीपीटी डालो, वो बता देगा डू दिस. सो right. वन मोर थिंग, लाइक आई सेड, पीपल हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट दे आर फीडिंग देमसेल्व्स, Mhm. सोशल मीडिया, चैट जीपीटीज एंड एवरीथिंग. सो वो ओवरवेलम जब करोगे नर्वस सिस्टम को, देन ऑल्सो स्पिरिचुअल बर्नआउट्स हैपन. Yes, very correct, ma'am. So next point is you have worked with global clients also. Do you see common emotional wounds across cultures, means Indian culture and foreign culture? Yes, yes, yes. I have clients in Canada. I have clients in UK. But emotions तो सेम ही है ना. एंगर तो एंगर ही रहेगा, एंग्जाइटी ही रहेगी, फेयर ही रहेगा. So it does not matter where we are. As a human race, we are one. Very, So the emotions, the energy at across globe is same. People feel करते हैं. very good, very good. So next question is, what does a truly aligned life look like according to you? A truly aligned life is one that where you feel that कि यार ये तो मेरी बेस्ट लाइफ है. Right, लो कि मैंने वो सब कर लिया जो मेरे को करना था. दिस इज व्हाट आई वांटेड. तुम्हारे हैप्पी रिलेशनशिप्स है, पीसफुल रिलेशनशिप्स है, तुम किसी के अगेंस्ट ग्रजेस, एंगर वो नहीं होल्ड कर रहे हो. तुम्हारे में एबिलिटी है कि तुम जाने देते हो. Mhm. तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ इज गुड. मनी लाइफ में आराम से आ रहा है, जितना भी है, डज नॉट मैटर, 50 लाख है या 50,000 है, बट यू आर सेटिस्फाइड. यू फील कि पैसा आराम से मेरी लाइफ में आ रहा है. यू आर एंजॉइंग योर वर्क. तुम अपने काम में ना मजा लेते हो. जैसे आप यहाँ हो, आपको मजा आता है ये करने में, मुझे मजा आता है जो मैं कर रही हूँ. तो Very, दैट वुड बी अ लाइफ विच आई फील एवरी वन शुड एम फॉर. very good, very true. And ma'am, then next question comes, what is your approach when a client is susceptible or resistant to energy healing work? Like I People said, ये want to सबका change. calling नहीं होता. I was very clear कि it is not everyone's calling, but I do tell them कि how your brain, your nervous system works out, and it is for everyone. People who are watching this also, some might stay till the end, some might just leave in the middle because their nervous system will feel कि यार, what is this? Because आपका body's basic function is to keep you safe. Now, Right, what is the right way of keeping safe or what is the wrong way of keeping safe? Your nervous system does not know. So when you go towards healing, body resist करता है. It resists you. It says कि मत करना, इधर stay here. This is good. Because उसको नहीं पता कि being stuck is a bad way of safety. right, So, and I help them. I hold their hands. I help them. We have this constant back forth video voice notes where they are saying something and I tell them कि it's natural. और मुझे पता होता है कि कितने period में वो ठीक भी हो जाएगा. So I tell them, you stick around till this time and it will go. It will pass. right. And then they are okay. So it Very is natural. wonderful, wonderful. Uh, Ma'am Parul, in your view, how can science and spirituality collaborate to support true transformation in any person?
सिंपल है बहुत. व्हाट इज साइंस? साइंस says that everything is made out of small particles, atoms. वो Right. क्या है? those are energies. Energies. so if you just believe this कि everything is energy, जिसके अगेंस्ट हम ग्रजेस भी होल्ड कर रहे हैं एट अ Mm. स्पिरिचुअल लेवल, एट अ साइंटिफिक लेवल, वो सिर्फ एनर्जी ही है. एंड नहीं होता किसी को फॉरगिव करना, नहीं इजी होता. आई हैव होल्ड ऑन टू ग्रजेस सो मेनी, कितने सालों तक मैंने ग्रजेस को होल्ड करा है, बिटरनेस को होल्ड करा है. तो इट इजी नहीं होता. बट अगर आप इतना सा रियलाइज कर लो कि वो भी पर्सन एक एनर्जी है, और जितना मैं इस ग्रजेस और एंगर्स को होल्ड करूंगा, उतना वही एनर्जी मेरे पास वापस आ रही है. Right. Very बस true. सिंपल वही, बस एक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस का आप इधर अप्लाई कर लोगे आपकी लाइफ में, तो वो सब सॉर्ट थोड़ा थोड़ा सॉर्ट होने लग जाएगा. Right. And you have told in Hopno, especially, I remember that day around 6, 7 months back, that suppose one is not giving us our money, one is not giving us our, love we require. You need not to have tension and grudge. Just do Hopno. Like, I am sorry, universe, please forgive me. Thank you. I love you. And this thing, when you do it 21 times, 51 times, 108 times, I think it changes everything. I have felt this. And with this tool of EFT and this, along with meditation, these three tools, I am now feeling more focused, and I have, given time to around 500 people in last 4 months. They could get rid of their bad habits, smoking, then alcohol, drugs, late night, sleeping, everything. So because I gave this mantra to them and they started doing it. Thanks again to Parul ma'am for this. थैंक यू मैम. एंड आई लव आप में जितना जील है, जितना एंथुजियाज्म है टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू बी एक्सेप्टेबल ऑल्सो, कि अच्छा ठीक है. आई स्टिल रिमेम्बर कि आप फर्स्ट टाइम आपने पूछा था पारुल मैडम कब तक करना Right, है ना, व्हेन आई हैव टू डू इट. right, एंड right, व्हेन आई टोल्ड यू कि नहीं, ये तो मतलब लाइफ लॉन्ग है, जब तक तुम्हें लगे तुमको करना ही करना है. right. So I am really admire the zeal and the enthusiasm you have. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you. you. And next question comes, what is the one message your soul, your inner self wants to share with my total world, my total viewers? Please. I just want to tell them कि जो भी करो, whatever healing modality you are or what you feel inclined to, whatever you do, just do consistently. Have faith कि results आएंगे. Do Right. not give up on yourself. Wonderful. और seek help. Help मांग लो. Nothing is wrong in asking help. Right. Very true, ma'am. If suppose, my dear viewers, if you face any problem, discuss with your friend, discuss with your spouse, discuss with your parents. If still you are not getting that help, go to Parul ma'am. If suppose she is not available sometime, you can come to me. You are having two healers. She is bigger healer. I am, thoda healer. But कोई the स्मॉल thing कोई is, बिग नहीं होता है. इट इज यू आर अ चैनल. यू yes, बस, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता. वी आर सेम है सब, एक ही है सब, एक जगह से ही आ रहा है. और परुण मैम, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब से मैंने पॉडकास्टिंग शुरू किया, आई थिंक टुडे इट इज 24th पॉडकास्ट, 4 आर हाँ. मोर अलाइंड इन नेक्स्ट 3 4 days. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर firm in my feeling that everybody can change their version if they listen to and work according to the guided by mentors. They can do wonders in their life. What we बस want जब is, आप अलाइंड होगे तो सब कुछ यूनिवर्स आपको देता जाएगा. yes, वो wonderful. कभी कुछ होल्ड नहीं करना चाहता है, वो देना Yes. ही चाहता है. तो जब आप अपनी एनर्जीज अलाइन करोगे तो सब आपको खुद ही आता जाएगा, इजी फ्लो होता जाएगा. And one more thing, Parul ma'am, today was my 211th live YouTube session. And वाओ, the, कंग्रेचुलेशंस. thank you. And the purpose is only one, that how I can reach to the remotest part of my incredible India and to the entire world. I can give this message, and this is totally free class of half an hour every day.
Thank you. Wonderful. Thank Astu, you. astu. Thank you, ma'am. So, Thank you, sir. thank you, thank you. So now I am coming on to some fast questions. We call it rapid fire questions, which my people would be loving it to have answer. One mantra you live by daily. Consistency, inner work. Inner work comes before everything else. Wonderful, great. And second question is, if not healing, what would you be doing today? Chartered accountant. You I are would be already there only. chartered. Wonderful. Right. Your favorite healing tool, Tarot, Reiki, Akshik records, or Hopno Hopno? सर ये टफ है सब पसंद है Because you are having everything in your kitty. yeah, and I practice most of them also every day, so all are my favorite. Very good. And ma'am, how much time you take to heal yourself, bringing to that energy which you want to give to your people in all these streams which I have discussed? So, like I said, we are all a channel. So, if you ask me, your experience, all these things where healing is concerned, does not matter as long as you are doing everything with good intention and with good ethics. But if you just ask about me, uh, I've been into this field now for 9 years. So, I'm working on myself for 9 years and I'm still working on myself. Wonderful. And that too, ma'am, as I know, you were CA. Your husband is CA. And Yes. even after that, you became this healer, great healer. This is really wonderful. कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. अपना रास्ता Yes. आपने खुद निकाला है. Wonderful. Thank you. Yes, it was. It was not a very easy journey, but thankfully I never gave up on myself. राइट राइट. जबकि सीए करना इतना आसान नहीं है दोस्तों. आप जानते हो, एक सब्जेक्ट में पास तो दूसरे में फेल, दूसरे में फेल तो तीसरे में पास. तो अल्टीमेटली लगा रहता है आदमी. और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद इन्होंने Yes. उसको छोड़ा. सिर्फ शायद उतनी स्पिरिचुअल, क्या कहना चाहिए, जीवों को, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवों को उद्धार करने के लिए आपने रास्ता चुना ईश्वर के माध्यम से. मेरा उधार ज्यादा हो रहा है Yes, but हाँ. give and take, one to one. It Yes, is. yes, why Yes, not ma'am. given? Now, one spiritual book that changed your life. A spiritual book I would say was Journey of Souls. It is about your past life और कैसे आपके souls ये life choose कर सकते हैं, कैसे आपके soul हर एक person जो आपके साथ बुरा भी कर रहा है, जो आपको hurt भी कर रहा है, कैसे वो आपने खुद ही choose करा होता है. बिकॉज आपको एज अ सोल ग्रो करना होता है, आपको एज अ सोल कुछ चीजें सीखनी होती हैं. सो Right. एवरी पर्सन, जिनको लगता है कि मेरे लाइफ में यार बहुत लोग हैं जो मुझे हर्ट करते हैं, टॉक्सिक करते हैं, देन दे नीड टू रीड दिस बुक. दे रियलाइज कि भैया ये हमने चूज करा है एंड लेट मी सी कि मुझे इससे क्या सीखना है. और फिर वो रिलेशनशिप खुद ही ठीक होने लग जाता है. Wonderful. Great, ma'am. And next question is, what instantly lifts your vibration on toughest days? EFT. Oh, great. So ये automatically I am होपोनोपोनो getting the answer. EFT, everything you are telling. Wonderful. The thing is that we have to practice, viewers. As our coach has told, mentor has told, you can do anything, but do it with your heart. Then you will enjoy. All the best. So my next question, your dream podcast guest or person you would love to collaborate with someday. Although today it is me, weak. But what It is is your yogi, but I feel कि my masters are there with me always, और right person आ जाएगा. Sometimes it comes magically. आप भी तो magically आए हो. answer? Yes, ma'am. So Yes. I don't have any dream postcard if I say as such, but yes, I believe कि जब वो right time होगा आ जाएगा. राइट. और सबसे बड़ी चीज पारुल मैम क्या है कि जिनसे मैंने सीखा ईएफटी, होपनो होपनो, आज वो मेरे पॉडकास्ट पर मेरे गेस्ट हैं. मतलब और इससे ज्यादा क्या चाहिए. और मेरे व्यूअर्स के लिए भी ये एक फक्र की बात है, एक प्राउड मोमेंट है कि वो एक इतने बड़े हीलर के साथ देख पाए. सो ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय लवली फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज दिस
podcast is going to around 3.5 crore people all over the world, in India as well as there. And I tell you, you are not going to see that you have not learned something. But further PhD, if you have to go, all details of Parul ma'am contacts will be there. You can contact. She's having level 1, level 2, level 3, all type of courses there. You can have it. All the best, my dear friends. And thank you again, Madam Thank you Parul, so much from my to side, have me. from my viewer side, that you have given your time, valuable time. Normally, you are busy at the time. Thank you. It was my pleasure being here and see right time पे हो गया. कब से हम try कर रहे थे but ये Yes, हो गया. So right. thank you so much and I'm so grateful to you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. I am Unicorn CEO